Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good. You're all safe, you all are healthy, and your preparation for your upcoming exams are going great and wonderful. Now, today we have a big announcement as far as CBSE exam is concerned. CBSE exam is cancelled. We all know that. Now, the biggest question everybody is asking me is that will this affect the upcoming CA exams or CS exams which are scheduled in July or August? If you are having any doubt or concern about this, now this is the video for you, because I will be giving my personal opinion and personal analysis as far as CA exams and CS exams are concerned, because many students are now asking that CBSE exam got cancelled. It is a big news. All over India exams, more than 15 lakh students were supposed to appear. Now CA exams or CS exams, will that happen or not? I'll give my analysis or personal opinion. Let us proceed further in next 5 to 10 minutes. Before that, the opinion and analysis is my personal. I don't have any secret information from any of the respected institutes. Now, the biggest news which came is that CBSE 12th board exams got cancelled. Health and safety of the student is the utmost importance, says PM Modi. Now, the question here is, if the PM Modi says that health and safety of the student is of utmost importance, then is this statement only applicable for class 12th board students, or this applicable to every student who is CA or CS or CMA or JEE or NEET, or every exam which is going to be the entrance exams which are going to be conducted in the coming future? Now, this is a big question. Now, in the major decision on Tuesday, CBSE exams got cancelled, and Modi said that health and safety of the student is of utmost importance. Now, the question come here is, why Modi said this and why CBSE exam got cancelled? We all know that the major reason is COVID-19 second wave. Second reason might be that PM Modi wants to give some relief to all the students, because there was a lot of panic among the students. PIL was filed in the Supreme Court, and everybody was not supporting that it will not be favorable for the students' health and safety to conduct the exam. Number 3, the vaccination has not been started below 18 year of students or 18 years of people, and 99% or 100% of the students who were giving exams of 12th board were below 18 years of age. So yes, this was also one of the major factors. Now, will this same thing will apply to ICAI, Chartered Accountants Institute, Company Secretary Institute, or Cost Accountant Institute? We don't know that. Now, CMA Institute also suddenly rescheduled the exams. They were supposed to conduct the exam from 26th of July. Now they have also announced that they will be postponing. They have postponed the exams, and they will give the exam. They will be giving the dates in the future. Now, why this happened? The big question. And Ministry of Corporate Affairs के अंडर हमारे CA Institute भी आता है, CS Institute भी आता है, और MCA के अंडर CMA Institute भी आता है. तो जब CMA इंस्टीट्यूट पोस्टपोन कर रहा है 26 जुलाई से, एनी फ्यूचर डेट कैन बी इन अगस्त और सितंबर, गॉड नोस, नोबडी इज नोइंग दैट. तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यस CA एग्जाम्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उस पर क्वेश्चन मार्क आता है. यस, आता है. तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि CMA इंस्टीट्यूट ने क्यों कैंसिल पोस्टपोन करे. इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन ने कहा कि कोविड ही एक रीजन है, सेकेंड वेव का ही एक रीजन है, लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स जो मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं,
उन्होंने मुझे बताया कि मोस्ट प्रोबेबली 99% जो मेरे CMA के एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं एंड इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू चेंज सम एग्जाम पैटर्न। और उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम लिया है, उनको टाइम लग रहा है बिकॉज ये यहाँ पे वो एग्जाम पोस्टपोन करे हैं एंड देयर इज सम अदर न्यूज की कुछ रीवेरिफिकेशन का भी रिजल्ट इन CMA इंस्टीट्यूट नहीं निकाल पाया है। तो 15 अगस्त के आसपास CMA इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करने की सोच रहा है एज ऑफ टुडे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड द $1 million क्वेश्चन इज, क्या कंडक्ट करा सकता है CA इंस्टीट्यूट एंड CA एग्जाम्स हो सकते हैं now possible in July and August 2021? I would say हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, time will tell. As of now it's again 50-50 because we cannot think that CBSE के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो इट्स 100% श्योर कि CA के भी हो जाएंगे और ICSI के भी हो जाएंगे। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट क्योंकि वो अलग बॉडी है। CS इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% से ज़्यादा 18 ईयर्स एंड अबव के हैं। यस, CA फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 18 ईयर्स एंड बिलो होंगे जिनका एग्ज़ाम अभी प्रपोज्ड है, लेकिन इट्स again a 50-50 game depending upon how things will turn out to be in this coming month. Now, how will institute react to this announcement? How ICAI will do the things? How ICSI, our honorable institute, will react to this? My opinion says that what ICAI will do now for CA exams, they can. Now there are two things. ICAI need to think that whether conducting exams from 5th of July 2021 is manageable or not manageable. Can they be conducted? Now how they will think that, when they will try to analyze things that whether they can manage the exams, whether they will get the permission from the authorities, whether they will get the permission from the central government or the state governments, whether they can arrange the examination centers, whether they can take the safety protocols as they have done in November or January. Now 5th जुलाई को एग्जाम अगर वो कंडक्ट करा सकते होंगे, then they will issue what? They will issue your date sheet जो प्रपोज होगी 5th of July से कि आपके एग्जाम होंगे, और वो डेट शीट आपकी 7th जून तक आ जानी चाहिए। इसी वीक में आपकी डेट शीट दिख जाएगी। And the moment date sheet is announced by Chartered Accountant Institute, ICSI will also respond. ICSI will wait and watch and definitely look into this कि कैसे एग्जाम्स ये इंस्टीट्यूट करा रहा है, कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ले रहा है, क्या उनको परमिशंस मिल रही हैं। अगर सब पॉजिटिव रहता है तो ICSI आर ऑनरेबल इंस्टीट्यूट जून 21 में क्या इशू कर देगा? शेड्यूल इशू कर देगा एग्जाम्स का, क्योंकि उनको भी 30 डेज पहले बताना है। और मेरे जुलाई एंड से या मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है अगस्त फर्स्ट वीक से ही एग्जाम्स आपके पॉसिबल होंगे। अगस्त फर्स्ट वीक से ICSI एग्जाम्स लेगा। नाउ जुलाई एंड से कई लोग कह रहे हैं ले सकता है, लेकिन यस मुश्किल है क्योंकि मेरा जो 25-26 जुलाई का जो स्लॉट खाली हुआ है, ICSI ने 31 जुलाई 2021 प्री एग्जाम की डेट दे रखी है कि आपको एग्जाम से पहले वो करना है। तो यस 1-2 अगस्त से वो एग्जाम ले सकता है। यस हो अगर CA इंस्टीट्यूट लेता है, एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, तभी ICSI will respond. If CA Institute is not able to manage the things, नहीं वो करा पाता, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती, तो CA Institute पोस्टपोन करेगा या मर्ज करेगा नवंबर में, एंड सिमिलरली ICSI will do and follow. तो ये अभी भी 50-50 की गेम है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि CBSE के एग्जाम कैंसिल होने के बाद हमारे एग्जाम 100% कैंसिल हो जाएंगे। हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते। It's again a 50-50 game. Exam can surely happen if things will be manageable. मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि manageable अगर होगा तो CA इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करेगा
एग्जाम कराए जाएं, because it is a loss of institutes, it's a loss of students, it is a loss of time, it is a loss of teachers, everybody is facing loss. अगर एग्जाम होने ही चाहिए और इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम कराता है तो आपको ऑप्ट आउट की फैसिलिटी प्लस 1 more attempt will be given for ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा इंस्टीट्यूट कि आपको एग्जाम देना ही देना है. यू विल गेट एन ऑप्शन नेक्स्ट टाइम एज वेल एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको देना है कि नहीं देना है. एंड अगर वो मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल का मतलब है कि जो भी सिचुएशन कोविड की दिसंबर 2020 या नवंबर 20 या जैन 21 में थी, दैट मीन्स लेस दैन 50,000 केसेस अगर हो जाते हैं तो एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं. नहीं होते हैं तो यस, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इट कैन गेट मर्ज विद नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट. यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होंगे क्योंकि सितंबर में, अक्टूबर में एग्जाम अगर होंगे तो वो नेक्स्ट साइकिल जो नवंबर दिसंबर की है वो इफेक्ट हो जाएगी एंड इंस्टीट्यूट कैन नॉट अफोर्ड दैट. तो यस, सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल होना एक बिग न्यूज है, लेकिन इसको ये मत समझ लीजिए कि वो एग्जाम कैंसिल हो गए तो हमारे भी 100% हो जाएंगे. हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट अगर मैनेज कर लेगा एग्जाम्स लेना, कंडक्ट करा सकता है, अभी भी करा सकता है, प्रोवाइडेड थिंग्स आर मैनेजेबल. दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन. व्हाट यू कैन डू, keep your preparation going, stay positive, stay healthy, stay blessed. अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो भी होगा everything will be good, सब अच्छा होने वाला है. And institutes will take decision taking into consideration every student at large. सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए एक म्यूचुअल डिसीजन लिया जाएगा, बहुत जल्द लिया जाएगा और आपको डेफिनेटली इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखना चाहिए. That's all from my side. Thank you very much for watching. Do like, share and subscribe. आपका कोई भी फ्रेंड इस टॉपिक के लिए पजल है, परेशान है, पढ़ नहीं पा रहा है, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है, टेंशन्स हैं, तो उनको ये शेयर कीजिए. And stay positive, stay blessed, stay healthy. Lots more things coming on my channel. God bless you. Stay connected, stay blessed. Goodbye. If you're new to my channel, do like, share and subscribe. God bless you. Bye bye. Jai Hind. Bye bye.